सो वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, आपको 4 फंक्शंस दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट ऑरिजिन। सो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x should not be equal to limit x टेंड्स टू 0 माइनस f of x। अगर राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट अलग है तो then such type of discontinuity is called non-removable discontinuity। अगर दोनों राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट इक्वल होके if that value is not same as functional value that is called removable discontinuity। so अब आप चेक करना है इसमें कौन सा फंक्शंस के लिए राइट लिमिट एट x is equal to 0 is not equal to left limit at x is equal to 0। ठीक है, so let us first analyze this। so first function आप देख सकते हैं लिमिट x tends to 0 plus 1 by ln mod x, 1 by ln mod x। so x tends to 0 plus mod x tends to 0 plus, so log 0 plus tends to minus infinity, 1 by minus infinity tends to 0। एनालिसिस ओके, x 0 प्लस में जा रहे तो mod x भी 0 प्लस में जाएगा, log 0 प्लस टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, 1 by माइनस इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। सो अगर यही 0 माइनस किया तो अभी भी ये 0 माइनस मॉड के अंदर जा रहे हैं। नाउ ऑल्सो mod x टेंड्स टू 0 प्लस, mod x टेंड्स टू 0 प्लस, सो log mod x अगेन माइनस इन्फिनिटी में जाएगा, 1 by माइनस इन्फिनिटी इज अगेन इक्वल टू 0। So 1 by log mod x के लिए right limit is same as left limit। Hence, this is not a case of non-removable discontinuity। अगर discontinuity हुआ तो भी removable। Next, let us take f of x is equal to x sin pi by x। So limit x tends to 0 plus x sin pi by x मान लीजिए। ठीक है, सो x टेंड्स टू 0 प्लस में पाई बाई x टेंड्स टू इंफिनिटी, सो साइन पाई बाई x जो है दिस इज सम नंबर बिटवीन -1 एंड 1। साइन पाई बाई x जो है 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होते रहेगा, इट डजंट टेंड टू एनीथिंग। बट इस नंबर में -1 to 1 के बीच में कोई भी नंबर को आप x से मल्टीप्लाई कर रहे, x इज 10 into 0, सो 0 into सम नंबर आपको 0 आ रहे। सिमिलरली x अगर 0 माइनस पे जा रहे हैं तो आपका एनालिसिस में चेंज क्या आएगा? पाई बाई एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ना, क्योंकि x इज 10 into 0 माइनस पाई बाई एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, सो साइन माइनस इन्फिनिटी भी अभी भी -1 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ रहेगा। इनटू 0 किया तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है। सो इस फंक्शन में भी राइट हैंड लिमिट इज सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए केस ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो यह थर्ड क्वेश्चन करें। थर्ड में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 by 1 प्लस 2 पावर cot x। ठीक है, सो नाउ एज x टेंड्स टू 0 प्लस cot x टेंड्स टू इंफिनिटी, एज x टेंड्स टू 0 प्लस cot x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि cot x का ग्राफ जो है इट लुक्स लाइक दिस। दिस इज 0, 0 प्लस में प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, 0 माइनस में इट गोज टू माइनस इन्फिनिटी। सो x टेंड्स टू 0 प्लस में दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी, सो 2 पावर इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। अगर वही 0 माइनस में किया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में माई cot x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, 2 पावर माइनस इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, सो ये 0 पे जाएगा, सो 1 by 1 the value of limit is 1। Hence right limit is 0, left limit is 1। Hence we have a non-removable discontinuity at origin for this function। So this is one of the right options। आप fourth option भी check कर लीजिए। So limit x tends to 0 plus cos of mod sin x by 2। So as x tends to 0 plus sin x tends to 0 plus mod of sin x tends to 0 plus by 2 किया तो भी 0 पे जाएगा, cos 0 is 1, so 0 माइनस पे भी गया, mod sin x अभी भी 0 प्लस में जाएगा,
by 2 tends to 0, cos 0 is again equal to 1. So fourth function में भी right limit is same as left limit. So we don't have a non-removable discontinuity. So ये चार functions में कौन सा function के लिए non-removable discontinuity है? Third. So welcome students. इस question में आपको दिया है चार functions and you're asked to find which of these following functions have removable discontinuity at origin. Removable discontinuity का मतलब है right limit should be same as left limit. So limit x tends to 0 plus f of x. If it is same as limit x tends to 0 minus f of x, then we say that f of x has a removable discontinuity at x is equal to 0. ठीक है, so आप चेक करेंगे. So first, limit x tends to 0 plus 1 by 1 plus 2 power 1 by x कितना होगा? So आप देख सकते हैं x 0 प्लस में जा रहे हैं तो 1 by x tends to infinity, 2 power infinity tends to infinity, so 1 by infinity आ रहे हैं, आपको लिमिट का वैल्यू 0 आ जाएगा. अगर वही 0 माइनस पे जा रहे हैं तो if x is tending to 0 minus, आपका एनालिसिस क्या होगा? x is slightly less than 0, नेगेटिव साइड में है, so 1 by x tends to minus infinity, so 2 power minus infinity tends to 0, so ये 0 हो जाएगा, 1 by 1, so the value of limit will be equal to 1. So right limit 0 आया, left limit 1 आया, that means it has a non-removable discontinuity. So this is not the correct option, ये गलत है. Next, so let us take limit x tends to 0 plus tan inverse of 1 by x. So x अगर 0 प्लस में जा रहे तो 1 by x प्लस इन्फिनिटी में जाएगा. tan inverse of प्लस इन्फिनिटी टेंड्स टू पाई बाई 2. अगर वही 0 माइनस में जा रहे तो 1 by x माइनस इन्फिनिटी में जाएगा. So tan inverse of minus infinity will go to minus pi by 2. So right limit is plus pi by 2, left limit is minus pi by 2. So ये भी removable नहीं है, non-removable. So let us take the third option. So f of x is equal to e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1. So limit x tends to 0 plus e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1. So that is equal to, as x tends to 0 plus 1 by x tends to plus infinity, 1 by x tends to plus infinity. So e power infinity, infinity में जाएगा, ये भी infinity में जाएगा. So with respect to e power 1 by x, 1 can be neglected. With respect to e power 1 by x, which is infinity, this 1 can be neglected. So आपको लिमिट क्या आया? e power 1 by x by e power 1 by x, which is equal to 1. So the value of right limit is equal to 1. And वही लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट किया था. अगर x टेंड्स टू 0 माइनस होता, 1 by x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, सो e पावर माइनस इन्फिनिटी इस बार 0 चले जाएगा. सो दीज टू टर्म्स विल बिकम 0. नाउ लिमिट में व्हाट विल बिकम इंपॉर्टेंट? दिस माइनस 1 एंड 1 बिकम इंपॉर्टेंट. सो आपको आंसर माइनस 1 by 1 आएगा, विच इज माइनस 1. सो राइट लिमिट इज प्लस 1, लेफ्ट लिमिट इज माइनस 1, अगेन non-removable discontinuity. So A भी गलत है. So first three options are wrong. So let us go with the fourth option. So limit x tends to 0 plus log of 1 by log of mod x is equal to, अगर x 0 प्लस में जा रहा है तो mod x भी 0 प्लस में जाएगा. log 0 plus tends to minus infinity, 1 by minus infinity is 0. सिमिलरली अगर 0 माइनस में जा रहे तो x अभी भी mod x कहा जाएगा, mod x 0 प्लस में ही जाएगा, बिकॉज वंस यू अप्लाई दिस mod, नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो बिकम पॉजिटिव नंबर्स. सो इवन इफ x टेंड्स टू 0 माइनस, mod x टेंड्स टू 0 प्लस, log mod x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, 1 by माइनस इन्फिनिटी इज 0. सो इसका राइट लिमिट भी 0 है, लेफ्ट लिमिट भी 0 है. दैट मीन्स the type of discontinuity is removable. So option D का removable discontinuity. So this is the right option. So welcome students. इस क्वेश्चन में दिया है f of x is tan inverse of tan x if x is less than pi by 4
and pi times integer part of x plus 1 if x is greater than pi by 4. Jump of discontinuity is being asked. So jump of discontinuity का meaning क्या है? So if right limit and left limit are different, modulus of the difference between the limits is called the jump of discontinuity. Right limit और left limit के बीच में difference जो है उसका magnitude जो है that is called the jump of discontinuity. So इसका jump निकालने के लिए what we do is let us find the right limit as well as left limit. Limit x tends to pi by 4 minus left neighborhood of pi by 4 में limit x tends to pi by 4 minus f of x is nothing but tan inverse of tan x pi by 4 से कम less than pi by 4 में this is the function. So limit x tends to pi by 4 minus tan inverse of tan x. So x pi by 4 के सामने है तो tan inverse and tan will get cancelled because pi by 4 lies in the range of tan inverse. So आपको डायरेक्टली दोनों कैंसिल होके x आ जाएगा which is pi by 4. That means the left limit is pi by 4. So if you take the right limit, limit x tends to pi by 4 plus pi by 4 plus में f of x ये वाला लेना पड़ेगा pi times integer part of x plus 1 that is equal to, so pi by 4 का जो वैल्यू है 3.14 by 4 0.78 के आसपास होगा. दिस नंबर इज समवेयर अराउंड 0.78. उसके इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एग्जैक्टली 0 इंटू पाई इज 0. सो द लिमिट इज इक्वल टू 1. सो राइट लिमिट इज 1, लेफ्ट लिमिट इज पाई बाय 4. सो व्हाट इज द जंप? Jump is nothing but modulus of right limit minus left limit. So 1 minus pi by 4. Pi by 4 is 0 point something. So 1 minus pi by 4 is positive. So mod लेने के बाद आपको directly 1 minus pi by 4 आ जाएगा. So option C is the right answer. Thank you.